So based on these two concepts, can we try a few questions? Let's see these two things. One is conservation of mass and other is constant proportion. Okay, let's see over here. We have a question. Let's see if we can understand what it says. क्या कहता है ये question? In a reaction, 4 gram of sodium carbonate was reacted with 10 gram of hydrochloric acid. The product was a mixture of 2.5 gram of carbon dioxide and 11.5 gram of sodium chloride. Okay, so as per the reaction, it's saying that sodium, you can see here, it's saying that we have sodium carbonate 4 grams. Okay, so we are having sodium carbonate, and it reacts with hydrochloric acid. I am not writing the symbol at present. Symbol आपको सिखाएंगे, उसके बाद में बताएंगे भी कैसे लिखते हैं. So sodium carbonate, how much I am having? 4 gram. Hydrochloric acid, I am having 10 grams, and they both combine to give you what they are giving to you? Carbon dioxide and sodium chloride. Sodium plus it's giving you mixture of carbon dioxide. So how much it's giving? It's giving you 11.5 grams of sodium chloride and 2.5 grams of carbon dioxide. Does this data follow the law of conservation of mass? क्या ये data हमारा उस law को follow कर रहा है? तो take out the mass of the reactants. 10 plus 4. What is the mass of product? 11, 12, 13 and 1. Of course, I have 14. I have 14. The mass of my reactant equals to mass of my product. Solve concept. It is following. This data is according to my law of conservation of mass. Quite clear? Okay. तो कभी चेक करना है. ये आ गया. अगर इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा आ जाता, थोड़ा सा हम इसमें कुछ आपको एक अलग से चीज बताते हैं. इसमें से अगर ऐसा आ जाता कि let's make a little bit change. This is the reaction. 4 grams, 10 grams. सोडियम क्लोराइड कितना बनता है? थोड़ा देर मान लेते हम. How much is sodium chloride formed? Easily. This total should be equal to that total. ये कितना टोटल है हमारे पास? 14 equals to, इसको मान लो x plus 2.5. So x will be how much? 14 minus 2.5, that is 11.5 grams. ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है आपको. 2 रिएक्टेंट है, 2 प्रोडक्ट है, 3 का मास हम दे दें, एक काम पूछ सकते हैं. So what is to be done? Conservation of mass. This mass plus this mass equals to going to be this mass plus this mass. जो नहीं पता उसको x मान लो and then क्रॉस, इधर से उधर आप ट्रांसपोज कर दो, आपको आंसर आ जाएगा. ओके, सो आई थिंक इट वाज क्वाइट सिंपल थिंग. यू जस्ट नीडेड टू वेरीफाई इट कि ये होता है या नहीं. वन मोर क्वेश्चन आई कैन सी ओवर हियर. Again there is a question. 6.3 grams of sodium hydrogen carbonate is added to 15 grams of ethanoic acid solution. The residue left is 18 gram. What mass of carbon dioxide gas is released in the reaction? दो चीज यहां भी रिएक्ट कर रहे हैं हम. We are reacting sodium hydrogen carbonate. We are reacting, okay. Okay, so here we are reacting sodium hydrogen carbonate to ethanoic acid. So sodium hydrogen carbonate, कुछ फॉर्मूला बता दें इस बार फॉर्मूला बता देते हैं हम आपको. इट इज NaHCO3 plus ethanoic acid is CH3COOH and that's going to give me a residue. जो भी रेसिड्यू हमारा यहाँ बन रहा है, कुछ कंपाउंड बन रहा है, यहाँ नाम दिया हुआ नहीं है, प्लस CO2. इट्स सेइंग दिस. ओके, सो यहाँ पे एक्चुअली सोडियम एसीटेट करके कंपाउंड बनता है, नाम नहीं दिया इसलिए हम अभी बता भी नहीं रहे आपको. सोडियम एसीटेट इज फॉर्म्ड ओवर हियर. So here the reaction is taking place and the residue is, so here this is 6.3 grams reacts with 15 grams and that's giving me residue of 18 grams. How much is carbon dioxide formed? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में यही किया था.
ये नहीं किया था, मैंने अलग चेंज करके बताया था कि ऐसा कर सकते हैं हम। आ गया हमारे पास। सो व्हाट इज दिस? एज पर माई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, व्हाट शुड बी 6.3 प्लस 15 शुड बी इक्वल टू 18 प्लस x, नॉट शुड बी, हैज टू बी। शुड बी तो ऑप्शन ही नहीं अपने पास, ओके, हैज टू बी। सो यह x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? आई कैन सी x इज 15 एंड 6.3, दैट इज 21.3 minus 18, and that's going to give me 3.3. So carbon dioxide gas evolved is how much? 3.3 grams of carbon dioxide gas is given out. Quite clear? So it is again based on law of conservation of mass. Let's see if we can do one more question. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो 1:8 by mass. अभी हमने देखा ही था इन वाटर 1:8 by mass. What mass of oxygen will be required? Hydrogen and oxygen they combine to form water in the ratio of 1:8 by mass. Now it's saying what mass of oxygen will be required to react completely with 4 gram of, अगर ये 4 grams है तो ये कितना चाहिए हमको? X. कंसेप्ट को हमने इक्वेशन से बना लिया। 1:8 तो रेशियो है मेरे पास, 4 में कितना जाएगा? ओके अगर हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शंस पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, आई कैन राइट इट एज 1:8 सच दैट 4:x. देन व्हाट डू वी डू? क्रॉस मल्टीप्लाई, आई विल गेट 1 into x equals to 8 for the 32 grams. I can here also do product of the extreme equals to product of the means. x into 1 is x equals to 32. अगर आप मैथ्स का रेशियो एंड प्रोपोर्शन यूज करना चाहते हो वो यूज कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे हमारे पास जो रेशियो में होते लिखा हमने, कितना दिया हुआ है, किसको रिक्वायर्ड है, यू पुट इट ओवर देयर, देन क्रॉस मल्टीप्लाई, यू आर गोइंग टू गेट योर आंसर. तो x is 32 grams. So for 4 grams of hydrogen I need 32 grams of oxygen to react. Okay, simple. 1:8 का रेशियो है तो इसका 8 टाइम्स चाहिए, जितना हाइड्रोजन है उसका 8 टाइम्स ऑक्सीजन का मास चाहिए हमको. So 4 का 8 times 32. Quite simple. Is it clear? So based on constant proportion. Clear? So you can do more and more such type of questions easily now. So that was about the laws, chemical combination, और ये सब हो गया. Now we came to a condition that the smallest particle which is called as atom. आगे हम यहाँ तक कि smallest particle is called as atom.